discussing a question from economy segment and question was question was question related Indian economy. Today, dear students, just I discussed a question of Sangam age. Sangam age. So history segment, ancient Indian history segment. Which one of the following explains the practice of वट्टा की किरुताल? वट्टा किरुताल, तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है और इस प्रैक्टिस में जो किंग होते थे, यदि वो युद्ध में पराजित हो गए तो उनके द्वारा सेक्रीफाइसल आप कहें, उसे सुसाइड भी कर सकते हैं, वो एक प्रकार से रिचुअल सुसाइड में से रिचुअल सुसाइड उनके द्वारा किया जाता था और वो अपने आप को स्टार्व करके, स्टार्विंग करके ये काम करते थे। सो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से ये रिचुअल सुसाइड, स्टार्विंग डेथ, इसके सहारे वो करते थे। तो इसी पर ये क्वेश्चन है। नाउ let us have some, yes, let us have Sangam poems. Sangam poems are pervaded with a warrior ethic. The goal of the hero of the Puram poems was to guard glory, fame, and a heroic death was greatly valued. It was believed that the spirit of the warrior who died in the battle dwelt in paradise. So this is very important. Practice of Vatta Kirutal. Vatta Kirutal was a Tamil ritual of fasting till death. मतलब मृत्यु होने तक अन्न जल का त्याग करना। और आपको स्मरण होगा चंद्रों मौर्य के द्वारा भी इसी तरह का कार्य किया गया था। अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज ए तमिल मार्शल. दिस वाज आइदर डन अलोन और एज ए ग्रुप विद द सपोर्टर्स ऑफ द कैप्चर्ड किंग. सपोर्टर्स ऑफ द कैप्चर्ड किंग. सो वट्टा किरुताल was a practice in which defeated king permitted ritual suicide by starving himself to death, accompanied by those who had been close to him during his lifetime. तो उसमें जो उनके नजदीकी लोग पार्टिसिपेट करते थे. तो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार के प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और जो आपका जो प्रैक्टिस एमसीक्यू के माध्यम से है तो उस पर निरंतरता बनी रहे, हमेशा उसका प्रैक्टिस होता है. सो डियर एस्पिरेंट्स, ये एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आया एंशिएंट इंडिया से और ये संगम पीरियड से ये प्रश्न है जो वट्टा किरुताल एक प्रकार का ये डिफीटेड किंग के द्वारा एक कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, तो इसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया. सो दैट ये काफी इम्पोर्टेंट है. अब कुछ ऐसे प्रश्नों को हम आपके समक्ष हम क्वेश्चन कर पाएंगे. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत्स at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding
तो यदि वहाँ की आबादी ऐसी नहीं है, A 20 lakhs, B 10 lakhs, C 30 lakhs and D 40 lakhs, तो भारत के संविधान के अनुसार पंचायत the intermediate level may not be constituted. तो यहाँ पर क्या है? The answer is A 20 lakhs. 20 lakhs इसका उत्तर होगा. Dear students, the inaugural session of Supreme Court of India took place on Supreme Court of India का जो inaugural session था वो कब शुरू हुआ? A 28th January 1950, B 31st January 1950, C 26th January 1950 और D 29th January 1950. So, dear aspirants, ये इसका आंसर ये होगा 28 जनवरी 1950, मतलब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन सेशन प्रारंभ हुआ. Who was appointed as Assembly Constitutional Advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? A. Rajendra Prasad, B. P.N. Rao, C. Raj C. Gopal Swami and D. K.N. Mulbekar. So the right answer is P.N. Rao. अब आइए कुछ इकोनॉमी के प्रश्नों को भी हम ले लें जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है. डियर एस्पिरेंट्स, तो आइए देखें यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्नों की जो हमारे पास अभी प्रश्न है. The spread of landlordism was marked by the growth of A. aristocracy, B. capitalism, C. sub-infeudation, and D. cultivation. So what should be the answer? The answer is sub-infeudation. Sub-infeudation, dear aspirants. So this is the right answer. और कहीं न कहीं इंटरनेट में बाधा उत्पन्न हो रही है और ये ऐसे तो समझ में बात नहीं आ रही है क्यों ऐसी बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन लगता है कि बाधा उत्पन्न हो रही है. सो इसे बट समटाइम्स आई थिंक इसका जो प्रसारण है वो बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है. डियर एस्पिरेंट्स, now यहाँ पर वीडियो आया नहीं है. तो लाइव मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपने को मोबाइल, इसलिए ये समझ में काफी नहीं आ रही है वेदर ये लाइव है अथवा नहीं है. इसी लगातार हम लोग प्रयास किए हैं. सो लाइव वीडियो इज नॉट कमिंग और आ नहीं रहा है. एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि लाइव वीडियो इज नॉट कमिंग. तो there is some fault. Yeah. I think now it is correct. I think now it is correct. So I should proceed.
मैंने इसको चेक कर लिया, so there is no trouble, and I should proceed. So dear aspirants, let us have some important questions, question and answer session. और यहाँ पर एक आपके लिए एक प्रश्न है, the British invested large capital in India in various enterprises. ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो पूंजी निवेश की गई, तो वो कई क्षेत्रों में की गई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डिड नॉट अट्रैक्ट ब्रिटिश कैपिटल? किंतु एक इंडस्ट्री में, एक उद्योग ऐसा था जहां पे कि ब्रिटिश कैपिटल नहीं आया, नहीं लगा, उसमें निवेश नहीं हुआ. वो कौन सा क्षेत्र था? ए कॉटन टेक्सटाइल, बी शिपिंग, सी इंश्योरेंस एंड डी टी प्लांटेशन. द राइट आंसर इज शिपिंग. शिपिंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रीजंस व्हाई रेलवेज कंस्टिट्यूटेड ए ड्रेन ऑन इंडिया? A. Interest on foreign investments was remitted outside India. B. The stock was purchased in England. C. They were financially losing concerns. Or D. Excessive salaries were paid to the European employees who sent their savings to England. So, dear aspirants, the right answer is they were financially losing concerns. So, now we may move to some other topics which are equally important, and इस इस तरह से हम आपको अब ले चलते हैं ऐसे प्रश्नों की ओर जहां पर कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये इन प्रश्नों को हिंदू समाचार पत्र के आधार पर हमने आपके लिए तैयार किया है, और हम आपके लिए इसे प्रस्तुत कर रहे हैं. डियर एस्पिरेंट्स, देखें ऐसे प्रश्नों पर भी आप दृष्टिपात करें जो काफी महत्वपूर्ण है. सो यस, consider the following statement regarding सरना रिलीजन. अब एक काफी करंट में चर्चा का विषय बना हुआ है सरना रिलीजन. द सरना रिलीजन इज ए नेचर वर्शिपिंग फेथ. दूसरा, द सरना रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन झारखंड. तीसरा, सरहुल फेस्टिवल इज द न्यू ईयर फेस्टिवल celebrated as part of Sarna religion. How many of the above statements are correct? A. 1 only, B. only 2, C. all 3, and D. none. So, dear aspirants, if you know the answer, you have to find out the correct answer, और आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा. If you are knowing, please. Okay. So, okay. So, the Jharkhand Chief Minister has written to the Prime Minister urging the recognition of Sarna religion, religious code for tribal communities in that state. So, this is the answer. The answer is C. All the three statements are correct. The request for Sarna code as a separate religious code in the next census has been long-standing demand of tribal groups, and the Jharkhand Assembly passed a resolution for the Sarna code on November 11, 2021. The Sarna religion is a nature worshipping faith that is also known as Sarna Dharma or religion of the holy woods. Followers of Sarna religion pray to trees and hills and believe in protecting forest areas.
Their holy grail is Jal, Jungle, Jameen. The Sarna religion is practiced by majority of the tribal community in Jharkhand. The tribal community celebrated the Sarhul festival, which is the New Year festival, as part of the Sarna religion. तो इसमें तीनों के तीनों ये जो हमारे स्टेटमेंट थे वे बिल्कुल सही है डियर एस्पिरेंट्स। अब अगला जो ये प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने प्रश्न किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए क्यूबिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग यूटिलाइजेज क्वांटम मैकेनिक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। द थर्ड स्टेटमेंट, fluxonium is a new type of superconducting qubit that can perform operations between qubits with greater accuracy but has a shorter lifespan than traditional superconducting qubits. So how many of the above statements are correct? A only one, B only two, C all three and D one. तो इस प्रश्न का भी अगर उत्तर आपके पास है तो आप इसे बताएं इसका उत्तर क्या है। Dear aspirants, if you don't have the answer तो हम इसका उत्तर आपके समक्ष बताएंगे and the answer to this question is B. Okay, statement 3 is not correct, so only two statements are correct. Researchers at MIT have made significant progress in developing a novel superconducting qubit architecture that can perform operations between qubits with much greater accuracy than previously achieved. They used a relatively new type of superconducting qubit called fluxonium, which has a longer lifespan than traditional superconducting qubits. Fluxonium is a type of qubit, quantum bit, that is based on operations at important junctions in a superconducting circuit. So, dear aspirants, quantum computing is a multidisciplinary field that utilizes quantum mechanics to solve complex problems faster than classical computers. A qubit is the basic unit of information in quantum computing. So, this way we have solved this question. Dear aspirants, आज काफी बाधा उत्पन्न हुई हमारे इस क्लास में और उसका कारण ये था कि इंटरनेट में अचानक से कुछ समस्या उत्पन्न हुई जो जिसका समाधान बहुत देर तक नहीं हो पा रहा था। दिस वाज द रीजन। तो आइए अब तो हम काफी अच्छे से इस क्लास को कर पा रहे हैं और आप हमें अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, कुछ और प्रश्नों को हम आपके समक्ष लेंगे और इसमें हमारे समक्ष कुछ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। यदि आप नियमित रूप से हिंदू का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे, तो आपको ये टॉपिक निश्चित रूप से मिलता है। क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट? पहला स्टेटमेंट, दे आर इंटरेस्ट फ्री bearer instruments to donate money to political parties. That was announced in the 2017 Union Budget. 2017 के केंद्रीय बजट क्या इसका अनाउंसमेंट हुआ था? They are interest free bearer instruments to donate money to political parties. That was announced in the 2017 Union Budget. दूसरा, it can be formed by any company registered under Section 25 of the Companies Act 1926. और तीसरा, electoral trusts must donate 95% of contributions received in a financial year to political parties. How many of the statements given above these are correct? Only one, B only two,
C. All three. And D. None. Dear aspirants, statement 1 is not correct and rest 2 are correct. Why do I say statement 1 is not correct? We should examine it. An electoral trust is a trust set up by companies to distribute contributions received from other companies and individuals to political parties. The electoral trust scheme was introduced by the UPA government in 2013, not in 2017. The scheme was meant to facilitate donation to political parties by corporates and individuals. Hence, statement 1 is not correct. Now, let us examine the rest two, and we find that the rest two statements are correct because the electoral trust had to apply for renewal every 3 financial years. Any company registered under Section 25 of Companies Act 1956 can form an electoral trust under the Income Tax Act 1961. Any citizen of India, a company registered in India, or a firm or a Hindu undivided family, or association of persons living in India can donate to an electoral trust. Hence, statement 2 is correct. Okay, and we have already understood that statement 3 is also correct. They must donate 95% of contributions received in a financial year to political parties registered under representation of the People's Act 1951. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, तो उन्हें ये उनके साथ ये किया जा सकता है. डियर एस्पिरेंट्स, अब एक और इसी तरह का रेड सैंडर्स, ओके, RED, रेड सैंडर्स, SANDERS. It is endemic to few districts in Andhra Pradesh. Or second statement, it is listed as Appendix 2 under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES, CITES, since 1994. Third, India was recently included in the review of significant trade process sites for red sanders. Dear aspirants, अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है. How many of the statements given above are correct? A1D1, B1D2, C all three, and D none. Dear aspirants, two statements are correct according to me. The third statement is not correct. India was recently included in the review of significant trade process of sites in red sanders. This statement is not correct. Red sanders is also known as red sandalwood. लाल चंदन की बात हो रही है. और आपने देखा होगा पिछले वर्ष पुष्पा नाम की एक पिक्चर आई थी जिसमें लाल चंदन की तस्करी का की पृष्ठभूमि थी. Is a tree species with the scientific name टेरोकार्पस. इसका वैज्ञानिक नाम Santalinas. Dear aspirants, it is endemic to few districts in Andhra Pradesh. The species is listed as Appendix 2 under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna sites since 1994. The species has been subjected to threats of illegal harvesting and smuggling, leading to their depletion from natural forest. Red sanders wood sourced from artificially propagation comprise a major part of legal export. The red sanders species was listed for review of significant trade process. India was recently removed from the review of significant trade process of sites for red sanders. So, on this score, statement 3 is not correct. India, okay, let me read. Okay, let me repeat it. India was recently removed from the review of significant trade process of sites for red sanders. The sites RST process enables disciplinary action in the form of trade suspensions directed at countries that do not meet their obligations. This is a process through which sites, a standing committee places increased scrutiny on the export of a species from a country to determine if the convention is being properly implemented. In the past, it has even
led to a recommendation to suspend trade with India. Hence, SA-23 is not correct. Dear aspirants, एक और इसी तरह का धारदार क्वेश्चन जो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड है. Consider the following statement with reference to cyclone Varda, VARDAH. Cyclone Varda. It was the result of tropical cyclone that formed in the Arabian Sea. It began as a depression, low pressure over the Andaman Sea and gradually strengthened into cyclone. और थर्ड स्टेटमेंट है the Arabian Sea's warm sea surface temperature and lengthier sea travel are to blame for the intensification. How many of the statements given above are not correct? A, only one, B, only two, C, all three, and D, none. So, dear aspirants, as far as this MCQ is concerned, first statement, okay, it was a result of tropical cyclone that formed in Arabian Sea, is correct. Okay, Cyclone Varda is a tropical cyclone originated in the southeast Bay of Bengal. It was created as a depression, low pressure over the Andaman Sea. तो इस प्रकार से पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट एंड रेस्ट स्टेटमेंट 2, 3, okay, 2, 3 are correct. It was not the result of tropical cyclone formed in Arabian Sea, but Bay of Bengal. It was created as a depression, low pressure over the Andaman Sea, later slightly intensified further as cyclonic storm. The reason for intensification can be attributed to the warm sea surface temperature of Bay of Bengal and longer sea travel. Hence, statement 1 is not correct, 2 and 3 are correct. So, dear aspirants, एक और अगर सवाल हम लोग ले लेंगे कांगरी, KANGRI, नोट कर लेंगे KANGRI, that has recently been in the news, is related to which of the following? A, traditional dance, B, musical instrument, C, breed of cattle, D, earthenware heater. So it is Kangri, also known as Kangar or Kangid, is pottery filled with blazing embers and housed in lovely handmade wicker baskets. Kashmiris store a portable and moving heater in their firan, a long woolen cloth extending down to the knees, are used by people during the cold winters. A pot may hold roughly 250 grams of charcoal, and a firan fire can endure for hours. It keeps people warm throughout the severe winter months when temperatures can fall below -20 degrees Fahrenheit. It is famous for its outer shell constructed of willow wicker braids which grow abundantly in the marshes of Gandarbal region in North Kashmir. Hence, option B is correct. Okay, earthenware heater. So, Kangri is earthenware heater. Dear aspirants, we may take one more question. So, consider the following statements regarding vampire viruses. Vampire, VAMPIRE. We have two statements in this MCQ. They are pathogens that attach themselves to other viruses in order to proliferate. Or second, they form when a bacteriophage binds to a soil-borne virus. Which of the above statements are correct? A only, 1, 2, C both. So both the statements are correct because several vampire viruses have just been found in the first time, for the first time on US territory. They are pathogens that attach themselves to other viruses in order to proliferate. They form when a bacteriophage attaches to soil-based virus and uses its life to survive on its own. So, dear aspirants, both these statements are correct. So, our answer should be C. Dear aspirants, I lost at least 20 minutes. So
I extended my class today, and now it is half an hour completed. So let us conclude our class. और यहाँ पर हम आप सभी को शुभकामना देते हैं, गुड नाइट कहते हैं, और कल फिर 7:30 बजे हमेशा की तरह हम लोग अपना क्लास करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आप अवश्य उपस्थित होंगे और आप देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी, यूपीएससी क्रैक करने की आपकी जो तमन्ना है, आपका जो जुनून है, उसका मैं साथी बन सकूँ। सो विथ दीज वर्ड्स, thank you for joining me, dear aspirants. Good night to all of you.